Hello, dear friends. Today again we shall talk about two very important qualities which are assessed at the SSB. So today we will talk about decision making and influence. Decision making, as we know in defense forces, जब कितनी टफ सिचुएशंस होती हैं, कई बार कितने टफ ऑपरेशंस होते हैं, उनमें आपको बहुत क्विकली डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और डिसीजन मेकिंग इज एबिलिटी टू मेक क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजंस. तो उस सिचुएशन में जहां आपके पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, आपको सारे पहलुओं को देखते हुए वन हैज टू डिसाइड, क्विकली डिसाइड. So that is decision making. So this quality is very, very essential in SSB as a requirement. So it requires analytical approach and approach to problem solving. Because decision making बेहतर होने के लिए हमारा एनालिसिस बहुत सही होना चाहिए कि हम considering one not only one aspect but considering all the multiple aspect of that particular situation and then coming to deriving to some conclusion or coming to some action. And critical thinking is that essential part of problem solving and analytical approach to that particular situation. And emotional intelligence again is very important because once we are working amongst the team members, one not only has to understand himself but he has to understand his team members so as to decide or टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर्स. सो क्यूमुलेटिवली सबको ध्यान में रखते हुए उस समय क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड देन मेंटल टफनेस. सो मेंटल टफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में व्हेन वी इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ और अदरवाइज ऑल्सो जब डिफिकल्ट सिचुएशंस और ऑपरेशंस हैं उसमें मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जितना मेंटली टफ होंगे उन डिफिकल्ट सिचुएशन में, कितना कोई काम एंड कंपोज्ड होंगे, ही विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस. एंड देन इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन. सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल चीज़ों को सोच के, मल्टी फैक्टर्स को सोच के कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, और जब दो तीन सिचुएशन के हिसाब से सोच के देन कमिंग out or deriving some conclusion. This should be the action after having thoroughly analyzed, critically analyzed. So this is all about decision making. So decision making is very important when it comes to SSB. So this quality needs to be developed or by this problem solving approach, analytical and critical thinking, and having that emotional intelligence, understanding people, understanding your team members. So now we move on to influence. What is influence? Influence is ability to influence or persuade your team or other members, your peers also. उसको influence कहते हैं. और किसी एक leader को influential होना बड़ा important होता है. And that quality of leadership is very well reflected once that person is influential. He is able to persuade his team members. उनको inspire, motivate करने के लिए वो इन्फ्लुएंस करता है. सो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू एसएसबी. एंड इट रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस. तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंट जितना कोई है, कोई कैंडिडेट है, तो ही विल बी कंसिडर्ड मोर इन्फ्लुएंशियल बिकॉज वो उससे कॉन्फिडेंस से और अच्छे कम्युनिकेशन से अपने टीम मेंबर्स का, अपने पीयर्स का ट्रस्ट गेन करता है. एंड ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो अदर पीपल आर एबल टू be convinced with you. And then building strong image or personal brand, it's very essential because personal brand भी तभी बनता है when someone or and that individual is very confident, he and people are convinced with his ideas. So that confidence is very important because that confidence begets him the trust, and then he is considered more influential or people are able to buy his opinion and follow him. And then understanding people, it's very important because working within the team, लोगों को समझना, खुद को समझना बड़ा essential होता है. And then active listening, this is the quality which is very very important because दूसरों को समझने के लिए we have to be or one has to be a active listener. Active listening is very very important. किसी का perspective समझने के लिए one has to have this quality of active listening. And then being persistent despite encountering resistance, criticism and indifference. तो जब हम टीम्स में काम करते हैं हमें रेजिस्टेंस भी आती है, और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ लोग हमसे इनडिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज दे विल नॉट बी कन्विंस्ड विद यू एट टाइम्स. बट वहाँ पे
that leader has to be very assertive, and he has to influence, he has to inspire his team members. So, and he has to take that resistance or that feedback or indifference of his team members very positively. So this is very, very essential when it comes to that quality of influence. So today we discussed these two qualities which are very, very important when it comes to SSB preparation. So that's all for today. Thank you.